Good evening all, and welcome to my first webinar on impact of Form 2B on your business and the introduction of QRMP scheme. But before I start with my presentation, I would like I would like to thank the following. So I would like to thank my parents, my teachers, my family, my wife, my daughters, my mentors, Mr. Ramarajan sir, Anil Menon sir, Santosh Nair sir, my friends, my Palmtex team, and a special thanks to Ronak Shah for preparation of the presentation and Pallavi Gosavi and Anjali Singh for this event management. Friends, many of you know me, but those who don't know me, for them there is a small brief introduction. Myself is Jayesh Shah. I'm having an experience of 15 years in the area of accounts, taxation, and I'm the founder director of Palmtex Solutions Private Limited, a company based in Mumbai. We are engaged in providing accounting, taxation services, including income tax, GST, professional tax. We are serving more than 300 clients. So, this presentation would be in Hindi and English both, because some of my friends and colleagues will be understanding uh, both the languages. Sorry. So, before I move on to my topic, here I would like to start the topic with the famous quote of Steve Jobs, connecting the dots. I would like you to take you through the journey of GST. I know that many of you know how GST came into place till now, what has happened. But still to connect is important to understand why this webinar has been brought. We need to connect it to the point, and we need to go to that point. So it was the midnight of 30th June 2017 when our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, in the presence of late President Mr. Pranab Mukherjee and late Sri Arun Jaitley, launched GST, Goods and Service Tax, One Nation, One Tax. And this was introduced for the seamless movement of tax credit, avoid double taxation, etc. So from 1st July 2017, what has happened till date? So let's understand that. There was a transition process from indirect tax, barring few, to GST. Still, there are some taxes which are in existence. New returns came into picture. The returns were in the form of GSTR 1, which is an outward supply return, GSTR 2, which actually never came into play. It is still only in the law. GSTR 3B, which came in place of GSTR 3. GSTR 3B is nothing but a summary of returns, purchase and sales, summary and payment of taxes.
Along with that, there was a monthly and quarterly compliances. People have to do annual reconciliations. I'm just having somebody's mic is on. Can I request the person to switch on? So annual reconciliations came into play. Along with that, there was an there was RCM. Then along with that, Form 2A came, GSTR 2A, wherein government said you will get the invoices that are filed in GSTR 1 will get reflected in Form GSTR 2A, which brought more reconsiderations, more rigid compliance because now you have to follow 2A. So when government brought GST in the initial stages, it was आप आपके रिटर्न से whatever your books are saying उसके हिसाब से आप आपका returns file करो. Then government says now I have form 2A, so now you look at 2A, उसके साथ reconcile करो, उसमें आपको जिसका credit दिखता है मैं उसका credit आपको दूंगा. So again a rigid. Then in October 2019, Rule 36(4) came into picture, which restricted the GST ITC to be taken, along with saying that there is a 10% cap. So initially it was a 20%, then a 10% cap on it. So you have to find the difference between the book and the 2A. 2A में जितना क्रेडिट दिखेगा उस पर आप 10% ऐड करके you can claim that credit. That was a requirement. So still more rigid. And what happened? बेचारा बिजनेसमैन अब करे तो क्या करे. He was worried, got tensed. अब कैसे करूँगा. और ये सब किसके लिए क्या है इतना कि गवर्नमेंट मतलब 2A ला रही है, ये सब करवा रही है. गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये सब करके. एज स्टेटेड गवर्नमेंट ने कहा वन टैक्स वन नेशन सीमलेस मूवमेंट ऑफ क्रेडिट. सो दिस वाज ऑल फॉर नथिंग बट इनपुट टैक्स क्रेडिट. आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली मिलना चाहिए. एज अ बिजनेसमैन इट इज माय बर्थ राइट दैट मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल मैंने बताया कि यहाँ पे देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, then there is a wholesaler, then there is a retailer and a final consumer. What happens is जब एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर को बेचता है, he charges him the GST. The wholesaler when he resells it to retailer, the retailer wholesaler charges GST to the retailer, and the retailer sells it to the end consumer. So here effectively the retailer has to get the credit what the wholesaler has charged, and wholesaler has to get the credit of what the manufacturer has charged. Basically double taxation नहीं होना चाहिए. And I'm sorry, in a common man's language if I have to say, तो what does a common man say. मैंने जो खरीदा, मैंने जिसमें जीएसटी भरा जिस खरीदार के पास से, वो जीएसटी मुझे मिलना चाहिए. So what is input tax credit? So here I am going to explain it with an example. So say for example this is a manufacturer who is selling a product and on which he charges GST of 450 rupees. Ideally
he is supposed to pay this GST to government, but he says no, मैंने तो कुछ मटेरियल ए के पास से खरीदा है जिसको मैंने जीएसटी का 100 रुपीज़ दिया है, कुछ मटेरियल मैंने बी के पास से खरीदा जिसके लिए मैंने जीएसटी 120 रुपीज़ दिया है, कुछ जीएसटी मैंने सी के पास से खरीदा उसका मैंने 80 रुपीज़। सो आई एम एलिजिबल, यानी दिस इज माई राइट टू क्लेम टू गेट 300 रुपीज़। मुझे ये 300 रुपये का क्रेडिट मिलना चाहिए। दिस इज माई बर्थ राइट एंड दिस इज वॉट द लॉ सेज। यस, द लॉ सेज दिस। तो ये आईटीसी है क्या? वाई आर वी सो मच लाइक आईटीसी आईटीसी, हम लोग सब लोग करते हैं करके। एंड हाउ टू क्लेम दिस? इम्पोर्टेंस इज, जैसे मैंने कहा वैसे कि नॉर्मल बिजनेसमैन वुड से कि मैंने जो आईटीसी मैंने जो खरीदा है उस पर जो जीएसटी लगा उसका जीएसटी मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। बट डू वी रियली नो हाउ टू गेट इट? गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस डाले उस आईटीसी क्लेम करने के लिए। एंड हाउ डू, कैसे करना है? गवर्नमेंट ने उसके लिए सेक्शन 16(2) बनाया जिसमें गवर्नमेंट ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। द फर्स्ट पॉइंट इज द पर्सन हु वांट्स टू क्लेम आईटीसी, जिसको आईटीसी अवेल करना है, उस he should be in receipt of goods or services। तो ये तो हम बिना इसके तो होता नहीं है, तो ये तो हम करते हैं। देन he has to pay tax, यानी आपका पास जो भी गुड्स आया, गुड्स के ऊपर आपने आपके क्रेडिटर को, आपके सप्लायर को टैक्स दिया है। Now here there is one condition, credit not to be available if supplier has not paid the tax to government। यानी आपने गुड्स मिला आपको, बट अगर आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को पैसा नहीं भरा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नाउ थर्ड कंडीशन इज फाइल द रेलेवेंट रिटर्न्स, नो क्रेडिट इन केस ऑफ इनवैलिड रिटर्न्स। मीन्स दिस सेज दैट कि आपके जो रिटर्न्स है, अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है, आपके क्रेडिटर ने रिटर्न नहीं भरा, आपके डीलर ने रिटर्न नहीं भरा, तो वो आपको क्रेडिट नहीं देगा। थर्ड इज द फोर्थ वन इज possess invoice, credit note and other tax paying documents। Now friends, point number 1, point number 2 and point number 4 is always duly followed। हम सब इसी पे ध्यान देते हैं, हमारे पास गुड्स आ गया, हम टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये पॉइंट नंबर 3 इग्नोर किया जाता है। एंड राइटली सो टू एन एक्सटेंट। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मेरा बिजनेस संभालूँ या मैं मेरे वेंडर ने भरा रिटर्न भरा या नहीं भरा वो सब चेक करने जाऊँ, मेरे पास इतना टाइम किधर है? एंड दूसरा, एज वी स्टे इन इंडिया वी डू बिजनेस ऑन ट्रस्ट, हम भरोसे पे काम करते हैं। तो मैंने भरोसा किया कि जिससे भी मैंने माल खरीदा है वो बंदा तो रिटर्न भर ही देगा। यस ऑब्वियसली, एंड दैट इज हाउ, जब से जीएसटी आया 2A आने तक तो वैसे ही चला करके। बट नाउ 2 आने तक तो ऐसे ही चला, बट व्हाट हैपेंड लेटर, ऐसे ही चल रहा था, सडनली गवर्नमेंट फील्स कि नहीं कुछ तो पक रहा है। गवर्नमेंट, एज द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड 1,15,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू आना चाहिए हर साल, कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग, कोई टैक्स भर नहीं रहा है, कुछ तो इश्यूज है। एंड देन केम अक्रॉस द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम एंड दैट वाज लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया तो गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रपोजिशंस एंड बिजनेस में जो इश्यूज हो रहे थे, लोगों को जो तकलीफें हो रही थी, ये सोच के गवर्नमेंट ने अगस्त तक के रिटर्न्स के लिए
रिवर्सल कर दिया 36(4) का। गवर्नमेंट ने कहा 36(4) इज नाउ रिवर्स टिल अगस्त रिटर्न्स। सो अगस्त तक आपको 36(4) की टेंशन नहीं करनी है, जैसे आप पुराना करते थे बुक्स के हिसाब से आप लेके जाओ एंड फाइल योर रिटर्न्स हैप्पीली। एंड देन इन द मंथ ऑफ सितंबर गवर्नमेंट केम आउट विद अ फार्मूला कि जो भी आपने लिया है तो उसका आपका प्रोपोर्शनेट करना है, जो नहीं है और जो एक्सेस लिया होगा तो आपको भर देना है गवर्नमेंट। यहाँ तक किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। थिंग्स आर गोइंग ऑन स्मूथली एंड थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन स्मूथली करते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, ये फिर भी स्टिल द क्वेश्चन अराइजेस कि why should why still government is not getting money, what is the problem, कहाँ पे गवर्नमेंट अटक रही है। सो टू रिजॉल्व ऑल दिस कमिट गवर्नमेंट ने एक फिटमेंट कमिटी बनाया एंड दैट फिटमेंट कमिटी केम आउट विद अ सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन वाज टू इंट्रोड्यूस फॉर्म 2B and quarterly return monthly payment scheme. First I will go through with the GSTR 2B and then I will go with quarterly return monthly finance. So what is this 2B? 2B है क्या? So what did government do? Government enabled the 2B in the GST portal from July 20 on a trial basis. Now here, the idea of government to introduce 2B was to give people, the businessmen, eligible credit and ineligible credit bifurcation with the statement remaining constant. So what is a 2B? 2B is nothing but an auto-populated input text credit statement that explains or that shows that what a businessman is eligible or what a businessman is not eligible. So what a businessman is eligible and uh, not eligible. Based on this, and the main point in this was the form is to remain constant. Constant means ये change नहीं होने वाला है, आपने एक बार डाउनलोड किया, it will remain constant. किसको, who is eligible to get this, किसको मिलेगा? हर वो रेगुलर टैक्स पेयर को मिलेगा जो 2B करता है, जो सॉरी जो जीएसटी भरता है. इट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1. आपके वेंडर ने जो भरा है उसका GSTR 1 भरा है, उसका इंफॉर्मेशन 5 भरा है, 6 भरा है, and it will show a detailed description, document wise details of ITC eligibility. So I'll just show you how it looks. ये फॉर्म कैसे दिखता है. So I hope this form is visible to everyone, and this is how it looks like. So as I read it, it is an auto drafted ITC statement. How this auto drafted ITC statement is generated? It is generated from form GSTR 1, 5, 6 and import data that is received from IceGate. इसमें आपका GST नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, ट्रेड नेम दिखेगा, कौन से डेट पे आपने ये डॉक्यूमेंट जनरेट किया है वो डेट दिखेगा. And as I said, they have bifurcated this form into two parts. One is ITC available and the another part is ITC not available. So when you look at the ITC available, it is ITC available is also bifurcated in four parts.
The first part is all other ITC supplies made from registered person after other than the reverse charge, उसका bifurcation है. Then input service distributor point 2. Again, if you see, it shows invoices, debit notes, invoices amended, debit notes amended, invoices. Then inward supply liable for reverse charge, imports of goods, others. This was ITC available, and then at the bottom they have bifurcated it into ITC not available. Same way, ऊपर जो 4 points थे, 5 points, the same 5 points are here, giving the bifurcations, and everything will be bifurcated. So you will be able to get to know everything. I will not go in details for this because for that purpose probably I'll have to take a separate session which will be more long than this. So then I'll come back to my presentation again. So now let's understand what are the importance and benefits of 2B. Now why did government feels or why did government feel कि ये क्यों इतना important होने वाला है? According to government, GSTR 2B is reported in a manner that allows taxpayers to conveniently reconcile, यानी आपके बुक के साथ, आपके बुक में आपने जो आईटीसी बुक किया है उसके साथ और पोर्टल पे जो बुक आईटीसी आ रहा है आप उसके साथ उसको रिकंसाइल कर सकते हो, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव डिटेल्ड invoices, credit notes, debit notes, all details are going to be there. So what will be ensured? Input tax credit not availed twice against a particular document, यानी आप टैक्स क्रेडिट एक ही बार लोगे, दो बार नहीं लोगे, गलती से भी नहीं लोगे. लॉ के हिसाब से जो आपका टैक्स क्रेडिट रिवर्स होना है वो एक्चुअल में रिवर्स होगा, जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम नहीं करते हैं या नहीं होता है कोई भी रीज़न के वजह से, बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो करना था उसका आपको करेक्टली पेड हुआ है उसका डिटेल्स मिलेगा. कौन से जीएसटी 3B के कौन से कॉलम के अंदर आपको कौन से इनवॉइस का और डेबिट नोट का क्रेडिट मिलना है उसका डिटेल बाइफर्केशन इसके अंदर होगा. दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट फील्स that this is going to be more beneficial than GSTR 2A. So there is a glimpse of 2B. ये पोर्टल पे कैसे दिखता है? It's going to look like this. So जब आप पोर्टल पे डाउनलोड करेंगे तो पोर्टल पे से आपको ये कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया ये पोर्टल का रिप्रेजेंटेशन है. All other ITC supplies from registered person, inward supplies from ISD. You can download this in a PDF format, in an Excel format also. It it gives both the bifurcations, ITC available and not available. So 2A 2A is dynamic. Dynamic means it changes from day to day, as and when your supplier uploads the documents. Simple. यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपने अक्टूबर का रिटर्न आपका फाइल कर दिया होगा. अक्टूबर का रिटर्न फाइल करते वक्त आपने 2A डाउनलोड किया और उसमें अगर आपके किसी सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा था तो उसका क्रेडिट आपको उसमें नहीं दिख रहा था. नाउ इन दिसंबर व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर नवंबर एंड अगर आप अक्टूबर का 2A डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको उस सप्लायर का क्रेडिट दिखता है.
सो जो अक्टूबर का रिटर्न भरते वक्त आपने जो 2A डाउनलोड किया था वो अभी चेंज हो गया. नाउ दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट, तो इट चेंजेस अकॉर्डिंगली. What happens with 2B? 2B will remain constant. It will not change. यानी द सेम सप्लायर जिसने अक्टूबर का रिटर्न अगर दिसंबर में भरा है, तो आपका अक्टूबर का 2B चेंज नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपके नवंबर के 2B में रिफ्लेक्ट होगी. बोथ स्टेटमेंट्स आर मंथली अवेलेबल. The sources of 2A are GSTR 1, 5, 6, 7, 8 and the ice gate information that is from the customs department. Source of information for 2B is 1, 5, 6 and same ice gate. Content details of ITC of IGST available on imports. Flow in front from ice gate system to GST system. Same इसमें भी वैसा ही है, little bit of difference. After all doing all this मगजमारी and ये सब करने के बाद now government feels, काउंसिल का मीटिंग हुआ, काउंसिल को डिस्कस हुआ, ठीक है हम 2B भी लेकर आते हैं, लेकिन 2B में अगेन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, वेयर इज द क्रेडिट. सबकी क्रेडिट कहाँ पर है? क्रेडिट मुझे नहीं दिख रही है. गवर्नमेंट was finding it difficult to find out the result. The reason being कि अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी तो उसकी इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे होने वाली है. सो व्हाट टू डू? सो एंड साथ में स्मॉल टैक्स प्लेयर्स है जो हर महीना GST 1 सॉरी 3B भर नहीं सकते हैं करके. सो फाइनली one fine day and on 10th of November, government GST Council comes up with a circular stating that they have launched a new scheme, quarterly return and monthly payment schemes with invoice furnishing facility. Now, what is this scheme? The scheme is applicable for the people whose turnover is less than 5 crore or up to 5 crores. I am sorry. Means people whose turnover is less than 5 crores can opt for this scheme. They can either opt for a they have to file their GSTR 1 once in a quarter. Same way they can file their GSTR 3B once in a quarter. But with IFF, which I will explain at a later end. So who is eligible for opting for QRMP scheme? The taxpayer whose turnover is up to 5 CR in the preceding financial year. Means a person whose business जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1920 में जिसका टर्नओवर up to 5 CR था, the person can opt for it. The person can opt for it. Then sorry, how he can exercise, यानी वो कैसे exercise कर सकता है? So taxpayer can opt in any quarter, first day of the second month or preceding quarter to the last. So this here they mean to say is, say for example, the current quarter is October to December. Okay, what they want to do, what they mean by saying this is,
Sorry, excuse me, there is some. Taxpayers can opt in any quarter, first day of the second month, or preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. So my current quarter is October to December. So by first day of November, I should I should opt for the sorry I am sorry first day of August. I should opt for the scheme or latest by 31st October. This is what they meant. I hope the screen is sorry. What is the criteria for that? Taxpayers must have यानी taxpayer ने अपना last return भरा होना चाहिए due date exercising option करने से पहले. The another question एक क्वेश्चन है कि मैंने एक बार अगर ये ऑप्शन ऑप्ट कर दिया तो क्या मुझे वापस से ऑप्शन एक्सरसाइज करना है? नहीं, एक बार आपने कर दिया आपको वापस नहीं करना है, हर क्वार्टर में आपको नहीं करना है. ये आपका तभी रिवर्स हो जाएगा जब भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला जाएगा. For the first quarter, क्योंकि this scheme is coming from 1st of January 2021, the first quarter is stayed as January 21 to March 21. This is applicable for the people who have filed their October 2020 returns by November 2020, 30th November 2020. So if you have not filed your October return by 30th November, then you will not be able to, you will not be automatically migrated to the new scheme. आपको अक्टूबर का रिटर्न फाइल करने के बाद ही माइग्रेशन पॉसिबल है. You will have to do a physical migration. अच्छा आज स्क्रीन होती है चेंज नहीं है. So migration won't be possible. Okay. So what? How this is deemed monthly and quarterly filing of GST. So when we are filing the GST returns, we have the option. Currently, we are filing GSTR1 on a quarterly basis, whose aggregate turnover is up to 1.5 crore, जिसका ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा. These people will be deemed by default they can file quarterly 3B. There will be people जिनका टर्नओवर 1.5 CR होगा लेकिन वो GSTR1 फिर भी मंथली फाइल करते हैं तो उनका मंथली 3B है. And there are people whose turnover is 1.5 between 1.5 crore and 5 crores. तो क्वार्टरली 3B है. The here the person who is falling in category 2 उनको ऑप्शन है कि आप 5th दिसंबर से लेके 31st जनवरी तक you can shift it to the new scheme if you want to. How to make payments under the quarterly return monthly payment scheme? The due date for making the payment is 25th of the next month, following month, for the first 2 months. Yani if you are opting for the QRMP scheme, then you have the option to make the payments, tax payments till 25th of the next month for the first 2 months, and the third month you'll have to pay on the by 24th, that's a regular due date. And government has introduced 2 schemes in that. One is fixed sum method, second one is self assessment method.
Second one, self-assessment is what we do as on today. Fixed sum method is a new scheme. Here the government intends to say, government बोल रही है कि आप फिक्स पेमेंट करो, मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूँ फॉर्मूले से आप भरते जाओ करके. So what is this? Here government says कि if you opt for a fixed sum method, by default a pre-filled challan will come for the 35% of the tax paid, equal to 35% of the tax paid in cash of the previous month. How it is calculated? उसका एक फॉर्मूला है. The formula is, if you opt for a fixed sum method and अगर आप नए स्कीम में QRMP स्कीम में GST या 3B क्वार्टरली फाइल करना शुरू करते हैं तो उसका 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश, नॉट थ्रू क्रेडिट, कैश जो आपने भरा होगा उसका चालान ऑटोमेटिकली बन के आपके पास आ जाएगा. बट वाइल माइग्रेटिंग, यानी क्योंकि ये 1 जनवरी 2021 से आ रहा है, टिल दिसंबर आपने जो भी पेमेंट किया होगा कैश में उसका 100% आपको टैक्स भरना है अंडर द फिक्स सम मेथड. ओके, सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस. से गवर्नमेंट सेज कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया. गवर्नमेंट बोलती है, लोग बोलते हैं कि मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे मेरे पास क्या आईटीसी है ये डाउनलोड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब टेंशन नहीं चाहिए. इससे अच्छा ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 35% आप भर दो 100 एंड रिलैक्स, एंड बैलेंस टैक्स आप लास्ट जब फाइनल रिटर्न भरोगे तभी भर देना. सो हियर इट इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जांपल. Tax paid in cash during January to March, CGST 10,000, CGST 35% comes to 3,500, SGST 10,000, SGST comes 35% 3,500, IGST 20,000, 35% comes to 7,000, cess 3,000, 1050. Now for the people, यानी अभी तक जो पुराने स्कीम में थे और अभी हम नए स्कीम में जाने वाले हैं उनके लिए उन्होंने क्या वर्किंग बताया. एज दे से इट इज 100%. सो अगर आपने मार्च में 3,000 भरा तो आपको अप्रैल टू 21 में 3,000 भरा, एंड दिस इज टू बी पेड ओनली फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स. लास्ट मंथ आपका बैलेंस वर्किंग होने वाला है. SGST 3,000, SGST 3,000, IGST 5,000, IGST 5,000, सेस 1,000. अब as I said कि QRMP came with invoice furnished facility. So what is this invoice furnished facility? Here what government intended was कि अब आपने QRMP सिलेक्ट किया, आपको GSTR 1 भी क्वार्टरली भरना है, GSTR 3B भी क्वार्टरली भरना है, and people should get the credit also. So here government said we will introduce something called as IFF. IFF का मीनिंग है invoice furnishing facility. This clearly states that every month I can upload my invoices. जो मैंने sales invoice बनाया वो मैं upload कर सकता हूँ. But there is a cap. You can upload every month, but for the previous month. So 1 to 30 आप जो भी upload करोगे invoices of previous month, they will be considered for the calculation of the GST working for the current month, that previous month. यानी वो आपके 2B में दिखेगा, 2B में आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो. This is for first 2 months. इनवॉइस बनाओ, क्रेडिट नोट बनाओ, जो भी बनाओ, आपने बनाया, आपके पास टाइम है पहले 2 महीने 1 से 13 तारीख के बीच में आप जो भी जितने इनवॉइस अपलोड करोगे वो आपके 2B में दिखेंगे, यानी यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट. सामने वाला आपका
क्लाइंट कस्टमर क्रेडिट ले सकता है. कस्टमर क्रेडिट ले सकता है. Then in the third month you have to upload the balance. आपका जो बैलेंस 3B बैलेंस जितने भी रह गए थे वो सारे आप GSTR 1 के थ्रू. Now this will be not uploaded through GSTR 1 IFF, it will be uploaded through GSTR 1 and GSTR 1 का last due date हो गया 13th. So why did government bring this? Government brought this is because just for the sake everybody should get proper credit. So the total value of such B2B invoices is to be restricted to rupees 50 lakhs per month. यानी ये जो invoices आप upload करेंगे ये इनकी value cannot be more than 50 lakhs a month. Okay? क्योंकि it says whose aggregate annual turnover is 1.5 crore, less than 1.5 crore. So maximum cap is of 1.5 crore. So this was IFF. Due dates for filing quarterly 3B. Now after doing all this, government thought let us change the due dates and help the people filing their return, make them smoother. Hardships निकाल देते हैं. तो कुछ states के लिए उन्होंने 22 तारीख बनाई. Since I am addressing from state of Maharashtra, we have 22nd as a date to file the returns, and there are other than Maharashtra other states where the 24th is considered as to be the month for the quarter. But after doing all this, there would be some questions that would have come into your mind, and I would like to know those questions. People who have joined me through Zoom can put the questions in chat box. People who are watching through YouTube or Facebook can put in the comments. I'll try to answer whatever I can, but this is only for 2 minutes. I have something more to share with you after that 2 minutes gets over. So do anybody has a question? I already posted on the chat box. So from 20th May they shifted, no, 20th on 20 the one that you are talking 20th they shifted to 22nd. What they shifted to 13 is the 31st return that we are filing. We are filing on 31st say for August, July to September we were filing one GSTR 1 returns on 31st October. This they have shifted to 13th. So they have shifted the another date. One they have shifted back to 22nd. So if I want to migrate to quarterly return scheme, 31st January is the last date, na? As you say. 31st January is the last date. Yes, maximum. Yeah, the last date is 31st January. Yes, correct. What you advise for the SME segment? Is it favorable, or we should continue going for 1 month return like? No. See, for that purpose, that's where it is. Now, see how this is going to impact the business.
for the as Jamin Bhai has raised the question that how the SMEs are going to be affected by this. So now let's understand the impact, that why should somebody go with the QRMP scheme and why somebody should not. Sorry. So how is going to impact your business? आपके business पे क्या असर होगा इसका? See, first of all, your business terms and conditions will change with this now, because the big big B, and if you say here we can take an example of, like, I had recently an example of a national private bank with one of my SME client, and they enter into a contract. So in the contract, in the business terms and conditions, they have written a point saying that due diligence of return filing should be done, your GST return should be filed, and if we get the credit, then we'll make the payments. So what this big people are going to do, or big businesses are going to do, is they will change your terms. They will say, boss, we will buy goods from you. We may pay you the taxable amount. We'll pay you GST amount only when we see the credit. जब मेरे 2B में क्रेडिट दिखेगा तो मैं तेरे को पैसा देगा, अदरवाइज मैं तेरे को पैसा नहीं देने वाला. So what will happen with that 2B, with that terms and conditions? You will tell to your vendor, boss, मैं तेरे को टैक्स का पैसा देगा, तेरे 2B में जब तेरे 2B में दिखेगा, मेरे 2B में दिखेगा तो मैं तेरे को GST का पैसा देगा. So in a way, I should get my credit on time. उसके लिए, so that's going to affect your cash flow, because if your client does not pay you money with GST, and you are liable to pay GST to the government, and then you are supposed to pay to your vendor, तो आपका कैश फ्लो जा रहा है. Now, so it affects your receivables and payables. आपका रिसीवेबल पेबल भी अफेक्ट होने वाला है. Why it's going to affect your receivables and payables? क्योंकि आपका सिंस आपको टैक्सेबल अमाउंट का पैसा मिला, जीएसटी का नहीं मिला, सो द रिसीवेबल्स आर लुकिंग देयर, देन यू विल फॉलो फॉर द जीएसटी मनी विद द क्लाइंट. सामने आपको पेबल के लिए पूछेंगे लोग. सो आपका कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया. यू हैव टू कंप्लाई, यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग, किसका जीएसटी आया, किसका जीएसटी नहीं आया, किसका पेमेंट आया, किसका नहीं आया. डू दिस. Finally, what will happen? You will have to either, if you, since as you say, the small businessman is there, then he is only looking after his accounts and everything. तो वो तो अपना अकाउंट्स खुद देख रहा है, तो वो अब उसको ये भी करना होगा कि भाई जाके वो क्रेडिटर्स को मैनेज करो या ये करो. सो योर अकाउंटिंग पर्सन, अकाउंटिंग प्रेशर इंक्रीजेस. सो यू हैव टू इक्विप योर अकाउंटिंग टीम लाइक दैट, कि अब ये भी करो. यानी या तो आप टीम बढ़ाओ, या आपके टीम को उतना एफिशिएंट बनाओ कि भाई मुझे बताओ कि किसका पैसा आया, किसका नहीं आया. सो इन अ वे, आई एम गोइंग टू increase my cash flow, the impact on business. It's going to impact my cash flow a lot. So I would suggest the best thing to do is follow, don't go for IFF, file monthly GST, adopt the method of filing monthly GSTR1. Simple. Make it simple. Don't go for IFF. Don't take all this. Don't take even a fixed method system. कुछ नहीं. Simple, straight. Accept GSTR1 on a monthly basis. फाइल कर दो. आपका सामने आपके
इसको दिख जाएगा, क्लाइंट को दिख जाएगा, वो भी आपको आपका पेमेंट टाइम पे कर देगा. There will be no impact of credit, no impact on your cash flows, less problems, and effective way of doing it. It has to be that way, is what I understand, because then the things will be more simpler. It will also cost you less burden on your head. हर महीने आपका GST-R1 भी फाइल हो गया, हर महीने आपका GST-3 भी फाइल हो गया, खत्म, जीएसटी का प्रेशर खत्म. मेरा GST-R1 गया, उसका क्रेडिट 2B में आ गया, सामने वाले ने मुझे मेरा पैसा दे. So this is how it's going to have a huge impact. And this, why this government has done this? Government has done this is because government is looking for less corruption, less compliance issues, seamless movement of credits to everyone. जिसका जो right है उसको right उसका मिल जाए. That's how government is looking out. So we hope that it goes in the right direction, and it will work in a near future also. So with this, I would come to an end of my this session, and I would like to end the session with the famous quote from Chanakya Niti, which says, "A well-planned work produces good results." So friends, plan your GST implications very well, so that the impact does not look so heavy. Uh, does anybody has any questions? You can ask me. So, Jaibai, Hmm. in small businesses, we will be having many vendors who will be opting this scheme of quarterly return. So we'll Yes. have to track them na, every time that whether they have uh, paid the returns or not. So right now, तो चलो हम लोग को हर every month we get the credit because most of the people are on the track of monthly return scheme. Yes. But from 1st January, it will be difficult for us to manage this thing. No, no. No, it will become more simpler, because till now what, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपका जो छोटा वेंडर था, वेदर उसका क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको जल्दी से पता नहीं चलता था. आफ्टर दिस कमिंग इन, यू विल बी श्योर कि आपका जो छोटा वेंडर था उसने भर दिया है, एंड आपको आपका क्रेडिट इजीली मिल रहा है. Okay. It is So if you will also have to educate your vendors कि भाई आप ये IFF ले लो या GST-R1 मंथली फाइल करो, जिससे आपका काम इजी हो जाए.